इम्पोर्टेंट है, लाइक का एग्जाम्पल दिया है आपको. Okay, all right. Let's look at the various projects we have in road transport sector. Let's look at the first one. हम इसको ना अभी नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके देखते हैं. सो दिस वाज स्टार्टेड इन 1998 बाय द देन पीएम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, तो उसका एक ये प्रोजेक्ट का फोकस ये था. सॉरी, वन मोमेंट. ओके, तो प्रोजेक्ट का फोकस ये था सॉरी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड्स डेवलप करें. ओके, लेट्स डेवलप रोड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड सो दैट वी कैन इंश्योर दैट ट्रैफिक, यू नो, सिक्योर फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक इंश्योर कर सके. इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए. ओके, बिकॉज देन रोड्स बिकम टू chaotic in India, and the fact is we have a lot of people. The development of India depends largely on the infrastructure that road transport usually provides, because इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं roads को. Sorry. So clearly, the roads were important. Okay. Now we had the features were divided carriageways. You know, ना रास्ते के बीच में एक divided carriageway होता है, तो ये इस तरफ की ट्रैफिक इस तरफ रहती है एंड इस तरफ की यहाँ पे, that is called as a divided carriageway. Okay, service roads होते हैं, roads which will lead you towards the highway or away from the highway, है ना, that sort of thing. Service roads, better riding surface so that you have roads will last better. Grade separators होते हैं, over bridges, underpasses available होते हैं, bypasses, wayside amenities. तो ये सब कुछ available होगा. ऐसे सारे facilities and amenities available होंगे. ये check किया. Two major projects that are involved over here. One is the Golden Quadrilateral. Okay, Golden Quadrilateral क्या है? वो अभी इंडिया का northern point, southern point, eastern and western point को join करेगा. Okay, that is what. Sorry, मैं गलत ये बना रही हूँ उसको. This is one. The northern point, eastern point. The eastern point, southern point and western point. Okay, तो ये सब कुछ join जो करेगा, that is called as the Golden Quadrilateral. Okay, so which are these four cities basically? You're looking at Delhi. Delhi in the north में Delhi होगा. Then east में कोलकाता है, obviously that makes sense, that is eastern Kolkata. Mumbai in the west, so we are talking of Mumbai in the west over here, and then Chennai in south. Okay, Chennai in south, that is what we are talking about. तो ये वाली जगह जब तक like you know ये settlement जब तक होगा, तो like you just connect these four cities. Okay, इन 4 cities को connect करने के लिए जो बड़ा सा highway network build किया था हमने, that is the Golden Quadrilateral. Okay, now the thing is कि it is not like you're just constructing a road from Delhi to Mumbai. Okay, obviously there will be a lot of roads involved in the middle of these two cities. तो वो पूरा का पूरा network, highway network develop करना is what the Golden Quadrilateral had envisioned. Okay, so वो सारे major industrial, commercial, agricultural, cultural centers of India को भी connect करना था. All right. This was one project. Then the other was the north-south and the east-west corridors. Okay, north-south and east-west corridors said कि यार एक काम करते हैं, northern point पकड़ते हैं, southern point पकड़ते हैं, eastern point and western point, and इन दोनों को connect करवाते हैं. Okay, so ये जो connection था, that is called as the north-south and east-west corridors. Okay, अभी north में क्या आएगा? श्रीनगर. South में क्या है? कन्याकुमारी and Kochi. Okay, दो points पे जाके connect. I'll just show it to you in the map so that you have no idea. I mean, no this whatsoever, doubt whatsoever. Okay, ये देखिए, this is Srinagar in the north, and then this goes and connects with Kanyakumari and Kochi in the south. Green color का line ना, वो follow कर रहे हैं हम लोग. Whereas ये जो blue color का line है, जो east-west corridor के बारे में बात करता है, this is Porbandar to Silchar. Okay, तो पोरबंदर to Silchar जाता है ये. Fine, ठीक है. So अब ये सारे projects हुआ करते थे अपने. Now ये जो corridors थे, this was the east-west and north-south corridors. Okay, once again what we had envisioned was 4 to 6 lane expressways
जो ये सारे cities को connect कर देंगे एक दूसरे से. Okay. Now this National Highways Development Project conclude कर दिया, हमने इसको बंद कर दिया in 2018, and उसका जितना भी काम बचा था ना, whatever was left, all those projects were subsumed or just transferred to the Bharatmala project. Okay. अभी जो नया project है अपना, this has been stopped, and now we have a new project called as the Bharatmala project. तो ये जो पुराना जो भी काम बचा है, most of the work is complete, लेकिन पुराना जो काम बचा है, that will go into the Bharatmala project. Okay, fine. So Bharatmala is the new project that we are looking for, which is called as Bharatmala Pariyojana. Once again, इसके ऊपर question था, so got to know. Bharatmala Pariyojana is a new umbrella program for the highway sector. Okay, MoT के नीचे ही under the Ministry of Road Transport and Highways. तो उसमें अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब सारे जो हाईवेज को लेकर या रोडवेज को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल नाउ बी इंक्लूडेड अंडर भारतमाला परियोजना. ओके, तो ये इसके ऊपर फोकस करता है कि कितना क्विकली यू कैन एंड कितना सिक्योरली कैन यू ट्रांसफर द फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक अक्रॉस द कंट्री. ओके, दिस इज व्हाट इट फोकसेस ऑन. तो whatever critical infrastructural gaps may be available, आप उसको plug करते रहो. Okay. Now it also intends to improve connectivity in Northeast. ये भी एक aim है, and to leverage synergies with inland waterways. So this is also one thing. Northeast में connectivity थोड़ा lacking है. It has been so for a long time. The how do you say? The physical problem, like the real physical challenge in having road connectivity in Northeast is the Himalayas. Okay, what you are trying to do is fight the Himalayan terrain and say हम यहाँ पे रास्ता बनाएंगे. That is the physical challenge in constructing any sort of roads in the Northeast. Okay, and also the fact कि यार difficult terrain, वहाँ पे रास्ता बनाना difficult होता है. यूपी में इतने ज़्यादा रास्ते क्यों है as opposed to say the Northeast? Because it is easier to make roads. Also बहुत ज़्यादा population है, तो roads तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन it is alluvial soil, okay, and flat land, flat featureless land, so you are not going to encounter a lot of huge mountains or anything or something of the sort, so easily raste bana sakte hain. So that is one problem in Northeast, but this project is trying to improve that, and also the fact that हम हमारे inland waterways को connect कर सकते हैं क्या. Okay, so we are trying to think कि थोड़ा सा inland waterways को promote करने के लिए do we have connectivity to the inland waterways? तो then वहां तक connectivity हो, इसलिए approach roads बनाए जाए. Suppose for example this is the waterway. Okay, this is a river. ये वाला जो है ना वो river है, and it has these various like ऐसे points होते हैं जहाँ पे pick up drop off service है kind of river में. Okay, pick up drop off points है. So ये वो सारे points होंगे, तो वो points को approach करने के लिए भी फिर roads बना दो. Okay, approach road, service roads जो भी आप बोलेंगे तो बनाना. So you have to just that is what is what it means to leverage synergies with inland waterways, so that inland waterways का optimum maximum use हो, and since inland waterways इतने economical होते हैं, तो it should help out with the traffic issues in India also. Infrastructure को help करना चाहिए हमारे. Okay, कौन सी प्रोजेक्ट्स है? वी हैव डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. अभी भी बहुत कुछ बचा है अपना. इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स वो बनाने हैं. हमारा जो नेशनल कॉरिडोर है उसका एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट वगैरह वो प्रोजेक्ट्स. बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, coastal and port connectivity roads. Do you see how the project aims to connect anything and everything? Okay, greenfield expressways and balance NHDP works. जो पुराने प्रोजेक्ट, ये जो NHDP में से बचे हुए प्रोजेक्ट्स थे, वो भी प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पे कंप्लीट करनी. Okay, we have this national green highways project or policy that we have. One moment, drink water. Okay, so the National Green Highways Project Policy वो कहता है कि हम हमारे जो हाईवे कॉरिडोर्स है ना उसको ग्रीन कराएंगे. ओके, ग्रीन कराएंगे मतलब trees plant कराएंगे, pollution reduce कराएंगे, that sort of thing. Okay, so how does the government plan to do that? How does like कैसे achieve करेंगे हम ये aim को? So with the participation of the community, आसपास के लोग, farmers, private sector, NGOs and government institutions. Okay, everybody is supposed to participate. तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रीज प्लांट करेंगे, उससे एयर पोल्यूशन एंड डस्ट रिड्यूस हो जाएगा,
and it will also act as a natural sink for air pollutants and soil erosion को भी बंद करेगा ना वो, it will stop the soil erosion at the embankment slopes, तो ये भी होता है. Okay, so what we have decided is कि अगर हमको like if we have around 100 crores, okay, किसी भी 100 crores से तो ज्यादा ही होता है, नंबर मैंने इसलिए चूज किया है because 100% से करीब है. सो से सपोज अगर कोई रास्ता बनाना है एंड उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 100 करोड़ है, तो उसमें से 1 करोड़ 1% जो होगा of the total project cost, it will be reserved for the highway plantation and its maintenance. Okay, तो 1% of the total project cost इस सब के लिए रिजर्व किया जाएगा कि trees plant करते हैं and उसको maintain करते हैं and so forth. Okay, so this is the green policy, green highways policy of our roadways. Okay, fine. All right, that finishes off roadways, and now we move on to railways. Okay, railway zones देखते हैं इंडिया के. सॉरी रेलवेज देखते हैं एंड देन उसके बाद रेलवे जोन्स देखते हैं. रेलवेज इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वंस अगेन वी आर द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना, रशिया. इंडियन रेलवेज जो है वो मल्टी गेज मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम है, बट वी आर ट्राइंग टू स्टिक टू द ब्रॉड गेज एज मच एज पॉसिबल. हमारे यहाँ पे 3 गेजेस मिलते हैं, ब्रॉड, नैरो एंड मीटर. ओके, तो ब्रॉड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मीटर गेज ये है, नैरो गेज बहुत ही कम है, बहुत स्पेसिफिक जगह पे आप नैरो गेज यूज करते हैं. ओके, लाइक वो माउंटेनस रीजन्स में एंड ऑल नहीं, आप वो छोटे छोटे ट्रेन रन करते हैं, वेरी स्पेसिफिक कम पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, दैट्स नैरो गेज फॉर यू. मीटर गेज इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, हर जगह पे नहीं यूज करते. ओके, ये उसका नाम ही इसलिए बिकॉज इट शोज यू द लेंथ बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स. वो जो रेलवे ट्रैक्स के बीच का विड्थ होता है ना वो बताता है, लेंथ नहीं विड्थ होता है ना वो बताता है. ओके, so now this is the अब ये you have to understand कि we have less than 40% of the track is electrified. Okay, so we don't have that. अभी तक हमने बहुत जितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अचीव कर लेना चाहिए था, because that is how railway should work. Okay, लेकिन हमारा चल रहा है अभी भी, we are still in the process of getting it done. The 3 types of locomotives that are locomotives मतलब engines कौन सा होता है, रेलवे को engine जो होता है ना, तो वो कौन सा engine लगाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक, डीजल या स्टीम. ओके, तो once again electric and diesel is steam, तो we are once again तो electric and diesel ही है, and we are also trying to convert most of our diesel like जितना भी ट्रेन है जो डीजल के बेसिस पे चलती है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ 65% ऑफ द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फ्री ट्रैफिक. मतलब इंडियन रेलवेज इंसानों को भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं एंड सामान को भी कराते हैं, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है 65% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम फ्री ट्रैफिक. ओके, सामान जो वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचाते हैं वहां से आता है उनका रेवेन्यू. ओके, एंड हमारे कंट्री में 90% ऑफ द कोल जो है वो भी रेलवेज के थ्रू मूव करता है. कोल तो मूव करता है अपने यहाँ पे, coal certainly moves about in our country. Okay, बहुत important raw material है, place A to place B जाता है. So 90% of the coal in our country moves via railways. Have to remember this. ऐसे वाले stats please याद रखिएगा, because you're bound to be asked these in the exams. Okay, we have 17 railway zones, 68 divisions in India. वो railway zones के भी divisions होते हैं. So we have 17 railway zones and 68 divisions. एक 18 zone है जो हम southern coast railway करके सेटअप कर रहे हैं with its headquarters in Visakhapatnam. Okay, you have to remember which these railway zones and 68 divisions are. Let's see. यार ये पता है ना आपको कि हमने फर्स्ट रेलवे जो थी हमारी वो बॉम्बे टू ठाणे रन कर रही थी in 1853. You have to remember that. ये बाकी का डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा, it's not important enough. Like that's just वो मैंने इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से लिया था, so you can read it from there also if you want. Anyways, let's look at the railway zones in India. This is ये better है, ये इसको इस तरह से देखना ज्यादा बेटर है ना. This is a better representation of railway zones. ये विजुअली याद भी रह जाएगा. Let's see. Railway zones को ना 17 railway zones. So let's see how this works. Okay, हम ना इसको ऐसे see this is what तरीका क्या होता है नेम करने का. इधर आप उसको सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न वगैरह ऐसे नाम दो. ओके, सो आप बेसिकली 5 रेलवे जोन्स ऐसे चूज करो. एक सेंट्रल होगा, देन यू हैव द सदर्न, यू हैव द नॉर्दर्न, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न. ओके, ये ऐसे 5 आ गए. गुड. हाँ, फिर नेक्स्ट आप चले जाओ, देन यू मूव ऑन टू द
ऐसे वाला, like you know, let's go over here, ऐसे ईस्ट सेंट्रल है ना, इस तरह से जाओ फिर ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल. ओके, सो दिस इज व्हाट यू डू. ऑलराइट, फिर ये वाले रेलवे जोन्स होते हैं अपने, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल. So we move in that direction. Okay, we also have कुछ, फिर उसके बाद हमारे कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न. ओके, नॉर्थ ईस्टर्न जोन होता है हमारे यहाँ पे, या देन यू हैव अ साउथ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न. ओके, तो ये भी कार्डिनल डायरेक्शंस का पार्ट है, सो वो वाले जोन्स अवेलेबल होते हैं. देन वी हैव वन स्पेशल कॉल्ड एज द साउथ ईस्ट सेंट्रल, है ना, तो ये साउथ ईस्ट का भी सेंट्रल पोर्शन है अभी. You also have the one which is in northeast frontier, मतलब ये बहुत end को जाएगा. Okay, it will go to the northeast and the most remotest part of it, like we are trying to reach the remotest part, so northeast frontier. Okay, there is one called as the east coast zone and one which is called as the metro zone. Okay, so ये अलग अलग railway zones है अपनी country में. Let's look at all of these. Okay, पहले सारे direction wise कर लेते हैं. कार्डिनल डायरेक्शंस के हिसाब से जो है वो वाले जोन्स कर लेते हैं. सेंट्रल इज मुंबई. ओके, तो सेंट्रल इज मुंबई, तो मुंबई विल बी द सेंट्रल जोन. ओके, नॉर्दर्न इज दिल्ली, दिस मेक सेंस, नॉर्दर्न इज दिल्ली, सदर्न इज चेन्नई, वेस्टर्न इज अगेन मुंबई एंड ईस्टर्न इज कोलकाता. ओके, मुंबई के दो डिफरेंट रेलवे स्टेशन सेंट्रल एंड वेस्टर्न करके काम करते हैं. कैन समबडी सप्लाई मी इन द चैट विच दोस टू आर? Sorry. Yes, I will definitely try to send the this after PPTs after the lecture. नहीं बता रहे आप मुझको, फाइन, I don't mind, you can take your time and let me know in the chat what it is. Okay, so we have two different ones. एक मुंबई के दो different railway stations है. I need you to tell me कि कौन सा central का headquarters है, central zone का headquarters है, and कौन सा western zone का headquarters है. Please supply that in the chat. Yeah, people, I can't keep. Thank you, somebody did. हाँ, मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा, अरे आप ही है क्या बस. ओके, मैं पूछ रही थी कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है मुंबई का विच सर्व्स एज द सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर्स, एंड विच रेलवे स्टेशन इन मुंबई सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स फॉर द वेस्टर्न जोन. दो डिफरेंट हेडक्वार्टर्स है, दो डिफरेंट विद इन मुंबई इटसेल्फ. एक ही रेलवे स्टेशन को नहीं बुलाते, डिफरेंट रेलवे स्टेशंस गेट द ऑनर of being the western zone ka headquarters and central zone ka headquarters. So find out which that is. Okay, because I can't provide everything to you guys, you need to do that by yourselves. Okay, ye 4 cardinal mil gaye, abhi now ye 5 mil gaye. Now you move on to no, it's not that. उसको बैंड्रा बुलाते नहीं है, like at least that's not what it is called. Okay, now you move on to the other directions. Okay, तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न, that is गोरखपुर. Okay, जो यूपी में है. नॉर्थ वेस्टर्न, जयपुर in राजस्थान. साउथ वेस्टर्न, हुबली in कर्नाटका, and south eastern, Kolkata in West Bengal. Okay, so this is how it is. It does not necessarily have to be in the southeastern part. Kolkata simply serves as the headquarters of the southeastern part. Okay, ठीक है, समझा? So ये 9 मिल गए अभी हमको, proper 8 cardinal directions and 1 central. Okay, now let's look at this south central and north central and वो वाला चक्कर देख लेते हैं. Okay, so अभी let's look at north central. North central मतलब प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोला करते थे. So north central is प्रयागराज. Okay, साउथ सेंट्रल है सिकंदराबाद, हैदराबाद के बाजू में जो सिटी है, ट्विन सिटी करके हैदराबाद का फेमस है, सिकंदराबाद इन तेलंगाना, आई बिलीव. ओके, जबलपुर वेस्ट सेंट्रल का पार्ट है. ओके, मतलब वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर्स है. एंड हाजीपुर इन बिहार इज ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर्स. ओके, सो दिस इज योर
these are four more zones, okay, railway zones. Now उसके साथ साथ एक और ऐड हो जाता है हमारे पास, which is new, which is बिलासपुर. Okay, बिलासपुर is साउथ ईस्ट सेंट्रल. बिलासपुर फेमसली साउथ ईस्ट सेंट्रल करके मिल जाता है हमको. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स इज बिलासपुर. Okay, now apart from that you also add नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, गुवाहाटी, असम, as far as possible, जितना दूर तक जा सकता है रेलवे वहां तक. ओके, ईस्ट कोस्ट इज भुवनेश्वर, ओडिशा, एंड देन मेट्रो का इज नोन टू बी कोलकाता. ओके, तो कोलकाता का नोटिस कीजिएगा, वो ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर्स है, मेट्रो का हेडक्वार्टर्स है, एंड साउथ ईस्टर्न जोन का भी हेडक्वार्टर्स है. सो कोलकाता इज वन city which serves as the headquarters for 3 different zones. Okay, 3 different railway zones. And Mumbai serves as the headquarters for 2 railway zones. Okay, so मुंबई एक है और कोलकाता एक है जो एक से ज्यादा रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स करके सर्व करते हैं. ओके, फाइन. ओके, गुड. मूविंग ऑन. ये आपके रेफरेंस के लिए मैं रख रही हूँ, so that you can please go through the map once, because it's very important that you read through it. अच्छा, मिल गया आंसर, बता दिया आपने? अच्छा, डन. ओके, चलेगा, आगे जाते हैं. रेलवे प्रोजेक्ट्स देखते हैं. अभी जैसे हमारे पास एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हुआ करता था ना, वैसे भी हैव अ डायमंड क्वाड्रिलेटरल ओवर हियर. ओके, व्हाट डायमंड क्वाड्रिलेटरल इज ट्राइंग टू लुक एट इज इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज जो एस्टैब्लिश करेगा अ हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क. सेम बिजनेस, सेम प्रिंसिपल. वी जस्ट वांट वेरी क्विक मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, तो जैसे रोडवेज में यू हैव अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हियर यू हैव अ डायमंड क्वाड्रिलेटरल. सेम 4 सिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश करें आप, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ओके, उसको बिकॉज ये 4 एंड्स है ना अपने, दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, ये कोलकाता है यहाँ पे, दिस इज कोलकाता, एंड देन यू हैव चेन्नई ओवर हियर. ओके, तो इन चारों को कोरिलेट करना, you'll get the diamond quadrilateral. Okay, so this government, the government has also sanctioned the Mumbai Ahmedabad high speed rail. वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग with the financial assistance of government of Japan. Okay, can I please write that question in the chat box? Oh sure. I need to know headquarters of Central and Western Railway Zones. क्योंकि ये आपको पूछा जाता है यार, अनफॉर्चुनेटली ना, ये पहले पूछा गया है. सो जस्ट लाइक you've heard of so many railway stations in Bombay ना, तो like मैं आपको 2 देती हूँ, CST and Churchgate. चल, I'll make life easier for you guys. CST and Churchgate है, उसमें से बताइए कौन सा सेंट्रल का है, कौन सा वेस्टर्न का है, ये तो बता दीजिए कम से कम. ओके, because you can't have the same railway station serving as headquarters for all for 2 or more zones na? You will have different railway stations, so इसलिए वो दोनों दिए थे. चलो, back to business. ये जो we have that high speed rail project कर रहे थे हम लोग मुंबई to अहमदाबाद, तो उसके लिए we are we have sought assistance, technical and financial assistance from the government of Japan. Okay, तो ये upcoming train जो है, बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं, इसको जापान में ना शिनकानसेन बुलाते हैं. ओके, सो इसका ऑपरेशनल स्पीड है समवेयर अराउंड 320 किलोमीटर्स पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर्स पर आवर. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. ओके, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, इसके लिए बनाया है हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ओके, सो दिस इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, तो यहाँ से वो सारे छोटे बड़े काम जो होंगे उस प्रोजेक्ट को रिलेटेड, वो सारे बन जाएंगे. ओके, you try to reduce the rateism here around it. That is what you're really doing. Okay, so this is one project, the diamond quadrilateral. Moving on, there's another project called as the Setu Bharatam. You understand what a Setu is? Setu is a bridge. Okay, Setu का मतलब होता है bridge. तो Setu Bharatam
funnily enough, has nothing to do with railway port. I mean, has nothing to do with ports or anything. It is trying to make national highways free of railway crossings. Okay, it is trying to. ये project में ना, what the government is trying to do is construct railway overbridges and underbridges at unmanned railway crossings on national highways. Unfortunately, क्या हो जाता है ना, अगर national highway किसी railway crossing की तरफ से जाएगा, तो then obviously you see हमारे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे क्या हो जाता है, if we have a railway crossing, so then that becomes a problem ना, वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट वगैरह करता है, and then plus if it is unmanned, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो unfortunately, thank you Arman, absolutely correct. CST is the central railway zone का headquarters, and Churchgate happens to be the headquarters for Western Railways, Western Railway, absolutely correct, thank you. Okay, तो like I said, सेतु भारतम का जो प्रोजेक्ट है वो it is trying to you know reconstruct or newly create bridges, railway bridges, over bridges, under bridges across railway crossings. Okay, unmanned railway crossings. You also people here, do I have to tell you कि अपने यहाँ पे कितने लोग unfortunately yes railway crossings के ऊपर, unmanned railway crossings के ऊपर, because they are trying to cross the railway lines while being completely unaware that a train is approaching them. Unfortunately for like there are too many deaths, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा deaths हो जाती है इस तरह से. Okay, तो हम उसको भी avoid करने की कोशिश कर रहे हैं. That is Setu Bharatam. Just build over bridges and under bridges in and around that place. Okay, railway crossings के around. Okay, now special trains. Okay, let's look at the various special trains that we have. We have the Vande Bharat Express. उसको ट्रेन 18 बुलाते हैं. ये completely ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से निकली थी, पेरम्बूर चेन्नई से. इट्स पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. मैक्सिमम स्पीड इसका 200 किलोमीटर पर आ रहे. करंटली वो 130 पे ऑपरेट करती है. ओके, ट्रू ट्रेन है ये, न्यू दिल्ली टू वाराणसी, न्यू दिल्ली टू कटरा. ओके, दैट इज व्हाट दिस इज. देन यू हैव द राजधानी एक्सप्रेस. ये राजधानी हमको पता है, राइट? वी नो ऑफ व्हाट राजधानी एक्सप्रेस इज. राजधानी एक्सप्रेस इज दैट जो राजधानी से, मतलब न्यू दिल्ली से सारे स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करेगा. ओके, दैट इज द राजधानी एक्सप्रेस. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, यूजुअली इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है एंड फास्ट जाती है राजधानी एक्सप्रेस 130 टू 140, क्योंकि यूजुअली बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करना होता है ट्रेन. ओके, शताब्दी एक्सप्रेस जो हुआ करता था, that was a series of superfast trains in India. Okay, now ये usually short to medium distances पे operate करता है, and it returns to the station of origin on the same day. This is interesting. Okay, Shatabdi comes back on the same day. That is the whole idea behind Shatabdi. सारे के सारे नहीं, लेकिन जब ओरिजिनली शुरू किया था तो ये शताब्दी का आइडिया था. दुरंतो ऑब्वियसली मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस जाएगा ये. ओके, ये बहुत दूर तक जाता है and long distance and fast जाता है. That is the speed is the underlining key factor, key word है यहाँ पे. So fast है, long distance जाएगा, non-stop trains हुआ करते थे, अभी कुछ stops introduce कर दिए. Okay, it connects metros and several state capitals of India. That is what it does. Okay, then हमने एक नया वाला ट्रेन लाया, गतिमान. Okay, now गतिमान का maximum operating speed is somewhere around 160 kilometers per hour. Okay, and average वो 91 kilometers per hour से ऑपरेट करता है. दिल्ली टू झांसी रन करता था फर्स्ट वाला उसका. एंड दिस इज द सेमी हाई स्पीड रेल. ओके, एकदम हाई स्पीड नहीं होगा तो भी सेमी हाई स्पीड रेल ले लिया. ऑलराइट, बिकॉज इतने स्पीड्स नहीं मिलते हमको. तेजस इज अनदर फास्ट ट्रेन. तेजस एक और फास्ट ट्रेन है अपने यहाँ पे जो 200 किलोमीटर्स के पोटेंशियल स्पीड पे रन करती है. सो दैट इज वन ट्रेन, अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन है ये. एक अंत्योदया ट्रेन होते हैं. अंत्योदया मीन्स ना, ये दिस इज फॉर पीपल हु आर ऐसे प्रॉपर पीक रूट्स पे बहुत ज्यादा अगर पीपल होंगे, लाइक इफ यू हैव अ ह्यूज फुटफॉल होगा, बहुत ज्यादा पैसेंजर्स अवेलेबल होंगे एंड यू आर ऑल ट्रैवलिंग एट पीक रूट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे पुणे मुंबई और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो देन दिस इज अंत्योदया ट्रेन्स फॉर देम. ओके, दिस वाज अ कन्वर्जन ऑफ द जन साधारण एक्सप्रेस. ओके, दीन दयालु ऑब्वियसली लास्ट मिनट रिजर्वेशन, अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स लास्ट मिनट जो ट्रैवल करते हैं, यूजुअली जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, सो जनरल क्लास, सेकेंड क्लास कोचेस होते हैं अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स के लिए. ओके, सो यू हैव दोस दीन दयालु कोचेस. हम सफर ट्रेन अच्छे होते थे.
हमसफर ट्रेन्स दे प्रोवाइड कंफर्टेबल एयर कंडीशन 3 tier ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल अम्यूनिटीज मिलते हैं उनको, एंड वी हैड इंट्रोड्यूस सम 38 हमसफर ट्रेन्स. ओके, उदय ट्रेन्स वर इवन इम्पोर्टेंट. Uday trains are called Uday trains because it means Utkrishta means excellent, double decker air conditioned yatri. That is what the that's how the acronym Uday comes into being. Okay, so it was a double decker AC car, AC chair car train. Okay, improved amenities के साथ होते था. तो वो दो ट्रेन्स थे, बैंगलोर सिटी टू कोयम्बटूर वाला एंड विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा. ओके, दोनों साउथ की तरफ शुरू हो गए थे सदर्न इंडिया में. विस्टाडोम कोचेस इज वो जिसमें पूरा ट्रेन कैसे अपना मेटल का बना हुआ होता है ना, दैट्स हाउ अ ट्रेन इज. तो यहाँ पे विस्टाडोम कोचेस में यहाँ तक वो दिस मच पार्ट इज मेटल, एंड देन वो जो बाकी का पार्ट है जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ वो ग्लास का बना होता है. सो यू हैव दैट व्यू, वो पूरा व्यू मिल जाता है आपको. ओके, आजू बाजू का जो व्यू होता है पूरा, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू सीनिक माउंटेन रीजन्स एंड एवरीथिंग, सो यू गेट दोस विस्टाडोम कोचेस. ओके, सो इस तरह के कोचेस बनते हैं. Good, good. Then we are done with this. I'm wondering if I should go ahead and do all pipelines. We can pipelines बड़ा है chapter topic. So let's stop over here. Roadways and railways कर लिया बहुत है. कल pipelines करते हैं. Okay, and let's finish off this chapter. Hopefully. One moment. Okay, ठीक है. हाँ, अभी ना I want to move on to, okay, here we are. This is what we were trying to see. We were looking at this part. हम पंचायती राज स्टडी कर रहे थे कल. Remember what we were looking at? We were looking at the federal principles, है ना? We were trying to study the federal principles of our polity, कि हमारी polity federal कैसे हुई. तो हमने first thing जो check किया था, that was the legislative list. Okay, कि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर है उसको 3 डिफरेंट लेवल्स पे, लेजिस्लेटिव पावर को कंसिडर करते हैं, उसको 3 डिफरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिया है. एक ऐसा यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है. Then there is a state list जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बना सकते हैं, एंड देन यू हैव द कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बना सकते हैं. Okay, and of course you have to see कि किसको क्या precedence मिलता है कौन सी केस में. Okay, so we had checked out the legislative and distribution of legislative and executive powers between the union and the states. Okay, वो check out कर दिया था. Then we came across the local government, which will be distribution of powers between the state and the local rural and urban local governments within that state. Okay, so Maharashtra and Maharashtra का पंचायती राज and municipal corporation के बीच में जो भी distribution of power होगा, this is what we are dealing with over here. Okay, of course we dealt with Article 40 and 73rd Amendment Act and 11th Schedule Part 9, ये सब कुछ देखा था हमने, and we also checked out how elections and all happen. Okay, and reservations वगैरह कैसे होते हैं वहाँ पे, तो वो पंचायती राज का. Now let's look at the duration of पंचायती राज. Okay, पंचायती राज का ड्यूरेशन वही है 5 साल का जो हमने पहले देखा था. तो 5 साल, हर गवर्नमेंट 5 साल चलता है ना अपने यहाँ पे, तो 5 साल का ड्यूरेशन है. ओके, उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व होता है, वो भी डिसॉल्व हो सकता है. फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू पंचायत विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन. ओके, वही जो प्रिंसिपल्स लोकसभा के लिए अप्लाई करते हैं या विधानसभा के लिए अप्लाई करते हैं, वही प्रिंसिपल्स आपको पंचायती राज के लिए भी अप्लाई करने पड़ेंगे. बट एवरी 5 years यू हैव टू होल्ड फ्रेश इलेक्शंस. अगर 5 साल के पहले वो डिसॉल्व हो गया तो भी विद इन 6 months होल्ड फ्रेश इलेक्शंस. ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू पंचायत. नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे मैटर करता है यहाँ पे? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस टू द पंचायत. ओके, सो अपने यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है. ऑलराइट, तो जितना भी सुपरिंटेंडेंस होता है उसका, या फिर डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्शंस कब लेने हैं, डेट्स कब ये करने हैं, किस तरह से कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, ये सब कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंसेस. पंचायत, यार पंचायती राज को पैसे तो मिलने चाहिए ना काम चलाने के लिए, तो उनको पैसे कहाँ से आता है? Okay, the state legislature जो होता है, they may authorize the panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees. Okay, तो कुछ पैसा, कुछ काम जो होते हैं टैक्सेस कलेक्ट करने का काम जो होता है वो पंचायत
को दिया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर कहता है ये वाले टैक्सेस आप ही कलेक्ट करो, ओके, लेट्स नॉट गो बैक। कुछ ऐसा होता है जो लाइक गवर्नमेंट कलेक्ट करता है लेकिन पंचायत को दे देता है, कि गवर्नमेंट खुद कुछ टैक्सेस कलेक्ट करता है, टैक्सेस, टोल्स, ड्यूटीज वगैरह, लेकिन वो जो सारे प्रोसीड्स होते हैं, जो भी पैसा होता है, वो ऑल दैट इज गिवन टू द पंचायत, ओके, कि चला लो यार, आप अपना इससे अपना बजट बना लो, ऐसे टाइप्स में, ओके। देन कुछ ग्रांट्स इन एड भी मिलती है पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये भी होता है। अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाता है तो देन द पंचायत कैन गो एंड टेल द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि वी नीड मोर मनी टू वर्क, एंड द गवर्नमेंट यूजुअली उनको reasonably grants in aid दे देता है, okay। And then they can also provide for the constitution of funds for crediting all monies to the panchayats, okay। government कभी कभी एक proper fund बनाता है कि यार पंचायत के पास पैसा रहे हमेशा, okay। this is how the finances are। तो अपने यहाँ पे भी स्टेट की तरफ, स्टेट को कहाँ से आते हैं फाइनेंसेस पीपल, इसी तरह से आते हैं ना, स्टेट खुद भी कुछ टैक्सेस लेवी कर सकता था, अब तो वो सब कुछ बिजनेस बंद हो गया, नाउ इट इज ऑल जीएसटी, राइट, आधा स्टेट को जाता है, आधा गवर्नमेंट को जाता है, तो इस तरह से वो जीएसटी होता है। बट देयर आर, दिस इज जस्ट, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स है, हम और भी टैक्सेस पे करते हैं, देयर आर मल्टीपल अदर टोल्स, ड्यूटीज, टैक्सेस जो हम पे करते हैं। सो देन उस केस में कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट लेवी, यूनियन गवर्नमेंट लेवी करता है, स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है कि यार आप कलेक्ट करो, या फिर मैं यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा लेकिन पैसे स्टेट गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो वही जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में होता है, बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में भी नजर आता है, ओके। Then you have a state finance commission. Why a finance commission set up for? To review the financial position of the panchayats, okay. Finance commission जब national level पे set up करते हैं, तो that is to review the distribution of the economic resources between the union government and the states, okay. So if you have a state finance commission that is set up to review the distribution of economic resources between the state government and the panchayats, okay। रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन यूजुअली ये सजेस्ट करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इंप्रूव की जाए पंचायत की, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्सेस का, रेवेन्यूज का बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, सो दैट द पंचायत विल ऑलवेज हैव द मनी टू डू देयर ड्यूटी, अपना काम करने के लिए पैसे हमेशा होंगे पंचायत के पास, ओके। Interference of courts is barred in electoral matters. This is important. Courts cannot interfere in जो भी related petitions होते हैं, या फिर delimitations of constituencies होता है, allotment of seats होता है, उसमें courts को interfere करना allowed नहीं है, okay? That is the logic, that's the principle. Okay, ठीक है. Now you go on to municipalities, okay? Municipalities जो होती है, जैसे पंचायती राज रूरल लोकल गवर्नमेंट है ना, वैसे म्यूनिसिपैलिटीज आर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ओके। मतलब अर्बन रीजन का जो लोकल गवर्नमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटीज है, ओके। तो ना वहां पर यू कैन हैव यूजुअली उस तरह के, किस तरह के बॉडीज होते हैं आपके पास, नगर पंचायत होता है फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, जहाँ पे आपको थोड़ा अर्बन थोड़ा रूरल एरिया मिल जाएगा। म्यूनिसिपल काउंसिल जब छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा अर्बन एरिया होगा, एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बहुत बड़ा अर्बन एरिया होगा, जैसे पुणे का है, पुणे हैज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकॉज पुणे सिटी इज ह्यूज। मुंबई का भी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो बीएमसी, सो वो बड़ा होता है, लाइक क्लियरली बड़ा है वो, ओके। सो जब बड़ा वाला अर्बन एरिया है तो यू हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटा वाला होगा तो म्यूनिसिपल काउंसिल, एंड इफ इट्स अ ट्रांजिशनल एरिया व्हिच इज मेकिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो देन उसको नगर पंचायत अवेलेबल होता है, ओके। नाउ म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड यू हैव द 74th अमेंडमेंट एक्ट। अगर पंचायती राज से रिलेटेड यू हैव द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, तो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड यू हैव द 74th अमेंडमेंट एक्ट, ओके। दिस गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज कि यस नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अब तो ये बनता है, ओके। नाउ इसने पार्ट 9A ऐड किया एंड 12th शेड्यूल ऐड किया, ओके। पार्ट 9A विल सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया, जिसमें क्लियरली ऐसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए। एंड देन 12th शेड्यूल जो है, it gives you the 18 subjects detailing the powers, authorities and responsibilities of the municipalities, okay। So जैसे अपने पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है ना, तो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए यू हैव द 12th शेड्यूल, एंड पंचायती राज के लिए यू हैव द 11th शेड्यूल, ओके। 11th शेड्यूल क्लियरली पंचायती राज के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज के बारे में बात करता है, कौन से सब्जेक्ट्स पे होंगे, एंड 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज के पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन विच सब्जेक्ट्स, ओके, इसके बारे में बात करता है, चलेगा। इलेक्शंस कैसे, इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के या म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत के इलेक्शंस डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यूजुअली इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है जिसको वार्ड कहते हैं। ओके, सो जब आपके पास ऐसा छोटा अर्बन एरिया होता है ना, तो फिर को जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे उसको वार्ड्स कहते हैं यहाँ पे। ओके, दीज आर कॉल्ड एज वार्ड्स। आई डोंट नो, हैव यू एवर रेड दैट? कभी न्यूज़ इलेक्शन का अनाउंसमेंट सुना है, हाउ इट गोस, यू नो, ये वार्ड नंबर डैश डैश के कैंडिडेट है अपने, इनको वोट कीजिएगा, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। हैव यू हर्ड दैट? दिस इज दैट वार्ड। ओके, ये वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसको वार्ड कहते हैं। नाउ इसके ना वार्ड कमिटीज, यार देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वार्ड कमिटीज क्या होती है? वार्ड कमिटीज, लेट मी रिमाइंड यू, एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ओके, इनका ये लेट्स सी, इसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है। Let's just remind you of that. It's an advisory body. It is set up to form an action plan for the development of that ward. Okay, कौन कौन इंक्लूड करता है इसमें? यूजुअली ना वो उस एरिया के जितने भी जाने माने लोग होते हैं ना, इम्पोर्टेंट लोग जिनका पब्लिक वर्क्स में या फिर ऐसे केस में या अपनी अपनी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज होगा, तो ऐसे जाने माने लोग यूजुअली वार्ड कमेटी में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, so it is only available for municipalities having a population of 3 lakh or more. Usually all these people sit together and अपने अपने वार्ड के लिए जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में वो सोचते हैं, and then अपने recommendations they can give on to the proper executive body of that region. Okay, fine, which is usually a municipal council or a municipal corporation. तो उसको सबमिट किया जाता है। वार्ड कमिटीज इन्फ्लुएंशियल होती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है, बट प्लीज रिमेंबर इनका डे टू डे एग्जीक्यूशन से वास्ता नहीं है। दे डू नॉट टेक द डिसीजन ऑफ वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं लेते। Okay, that's what ward committee certainly don't do. Now but they do exercise a lot of political control. Let me remind you of that because वो बहुत influential लोगों से बनता है। Actually वो local politics पे भी depend करता है, but still. District planning committee. Okay, now let's look at the district planning committee. District planning committee का right, you understand what it means, right? District level पे एक committee planning district planning committee set up की जाती है. It will consolidate the plans prepared by the panchayats and municipalities in the district, and वो उसका एक draft development plan बनाएगा for the district as a whole. Okay, ये जो डिफरेंट वार्ड कमिटीज या फिर पंचायत के कमिटीज या म्यूनिसिपलिटीज के कमिटीज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स की, उन सबके प्लान्स कलेक्ट करता है एंड देन उसको एक साथ देखता है। इट व्यूज ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी लुक्स एट ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फ्रॉम फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव। ओके, बड़े वाले इससे देखता है वो, एस्पेक्ट से देखता है, लाइक ओवरऑल एस्पेक्ट से देखता है, एंड देन उसके हिसाब से एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करता है फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ओके, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का भी यही काम है यार, मेट्रो रीजन के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना। ये सारे प्लानिंग कमिटीज होते हैं, इसको याद कीजिएगा इस तरह से। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंस कमीशन। अभी हो गया अपना ये लोकल गवर्नमेंट हो गया, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज के बाद वी आर डन विद द लोकल गवर्नमेंट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज अनदर एस्पेक्ट of the federalism in our polity. Okay, and how it comes to redefine and reiterate that particular federalism, like that federalism का aspect in our polity finance commission से बार बार अच्छे से कैसे दिखाई देता है आपको। ओके, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन एक ऐसा बॉडी होता है जो इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि फाइनेंस के बारे में बात कर सके। ओके, किसके फाइनेंसेस? यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जैसा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए हम यूजुअली फाइनेंस कमीशन सेटअप करते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस is कि there is an article 280 in the Constitution of India which provides for the finance commission as a quasi judicial body. Okay, it is constituted by the president of India every 5 years. Sorry, हर 5 साल में हम ये बॉडी सेट करते हैं, यूजुअली प्रेसिडेंट सेटअप कर देते हैं, एंड अगर कभी कभी जल्दी भी सेटअप कर देते हैं। ओके, बट दिस इज वेयर द फाइनेंस कमीशन कम्स फ्रॉम। तो ये जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था अपना, इट वाज हेडेड बाय केसी नेगी, and 15th finance commission was headed by NK Singh. Okay, if the government does announce a new finance commission, you have to remember the latest guy who was responsible for the finance commission. Okay, इसका composition क्या होता है कि you have a chairman, usually जिनके नाम से commission जाना जाता है, नेगी commission या सिंह commission, NK Singh commission, chairman के नाम से usually वो commission जाना जाता है।
ओके एंड 4 other members to be appointed by the president. ओके president अपॉइंट करते हैं एंड ये सारे लोग चेयरमैन यूजुअली ऐसे इंसान होते हैं जिनका पब्लिक अफेयर्स में कोई तो एक्सपीरियंस रहा होगा, सो यूजुअली रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स और समथिंग लाइक दैट, यूजुअली ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं. एंड देन 4 other members कहाँ से आते हैं? एक जज होंगे हाई कोर्ट के, या फिर ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, अ पर्सन जिसका फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अच्छा नॉलेज होगा, सो ओके, पर्सन हु हैज अ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस दोनों समझता होगा, एक ऐसा इंसान जिसको फाइनेंस एंड अकाउंट्स अच्छा समझता होगा, एंड देन द पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, तो ऐसे 4 डिफरेंट मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन. ओके, एंड ऑल दीज पीपल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. ऐसा नहीं है कि एक कमीशन पे अपॉइंट कर दिया तो अगली बार कमीशन पे अपॉइंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, रिपीटेडली कर सकते हैं आपको उस कमीशन पे अपॉइंट. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ इसके फंक्शंस क्या है, इस कमीशन के फंक्शंस क्या है? दिस इज इट इज द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. सबसे बड़ा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ओके, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूजुअली which is pretty all powerful. Okay, and then there are the different states, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में जो पैसा है, टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये डिस्कस किया जाता है. ओके, allocation between the states and of the respective shares of these proceeds. Okay, कि कैसे कौन से स्टेट्स को कितना पैसा मिलना चाहिए, so on so forth. Okay, now the principles that govern the grants in aid to the states. Grants in aid मतलब जब स्टेट को पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा प्रोवाइड करके, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रांट्स इन एड. ओके, सो वो वाला पैसा उनको कितना कब कैसे मिलना चाहिए, वो वाला उसके बारे में बात करते हैं. And the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and municipalities. Okay, now you have to also understand कि जैसे ये यूनियन गवर्नमेंट है, ओके, मैं उसको यूजी बुला रही हूँ, यूनियन गवर्नमेंट है, एंड देन देयर आर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, SG1, SG2, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, तो वैसे ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी there is the panchayati raj, and then there are the municipal government and municipalities and all, वो भी तो अवेलेबल है. तो ये जैसे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड उसको ग्रांट से एड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ये वाला जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट आल्सो हैज टू गिव मनी टू द पंचायती राज एंड द म्युनिसिपैलिटीज, बिकॉज वो भी पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, तो स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे काम चलाएंगे, राइट, अपना. तो इनके लिए लाइक वो सब कुछ, everything has to be considered by the finance commission कि अभी यूनियन गवर्नमेंट has to give certain amount of money to the state government and state government also has to give some amount of money to the पंचायती राज and municipalities. Okay, तो जितना भी पैसे का मामला है ना, वो ये सब डिस्कस करते हैं. Okay, how each and every government can run properly and like अच्छे से रन कर सकता है, ऐसे वाला, like this is what you're looking for. Okay, when you set up the finance commission. Let's look at another part. एक और कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, नीति आयोग. ओके, नीति आयोग भी बताता है कि फेडरलिज्म कैसे काम करता है इंडिया में, हाउ डज फेडरलिज्म वर्क. नीति आयोग नीति आयोग से पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. ओके, we stopped that whole concept of finance planning commission and instead उसकी जगह पे हमने एक नीति आयोग बना दिया. ओके, नीति आयोग says कि नीति आयोग is the national institution for transforming India. Okay, ये उसका ये है, what do you say, acronym है, and it's नीति is the acronym for National Institution for Transforming India. Okay, जनवरी 1 में शुरू किया था हमने 2015 में. तो ये क्या करता है, this was created by an executive resolution of the government of India, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया था. So it's an extra constitutional body and a non-statutory body. Okay, तो ये कोई लेजिस्लेशन या लॉ नहीं है जिससे ये बना है, इसलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. ओके, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसका रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल में मिलेगा. ओके, जैसे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 कहता है देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन. ओके, एवरी 5 years and never less than an interval of 5 years there shall be a finance commission shall be constituted by the president of India. Okay, this is a proper constitutional body. So वो statutory भी है, constitutional भी है, क्योंकि बताया गया है. Okay, then there is something called as non-constitutional. Non-constitutional illegal होता है, जो अलाउड नहीं है, ऐसी वाली चीजें होती है. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट प्रिंसिपल्स में है या फिर लाइक
which goes against the constitution will be called as non-constitutional. And then there is something called as an extra constitutional, मतलब जो हमारे constitution में included नहीं है, but that is okay because हर चीज को constitution में include करना जरूरी भी नहीं है. Okay, as long as you have a resolution, एक resolution के हिसाब से बनाया गया है, then that is okay. Okay, it simply means it lies outside the constitution. It is not illegal or anything. That is what extra constitutional means. Okay. तो नीति आयोग जो है, इट इज आवर प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ये सारे प्लान्स बनाता है जिसको एग्जीक्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है. दिस इज द लॉजिक. लेट्स सी. इंटरेस्टिंग लोगों से भरा पड़ा है. लेट्स सी, चेयरपर्सन कौन होते हैं? ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हु होल्ड्स द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया? ओके, गवर्निंग काउंसिल कौन होता है? सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट्स के. ओके, सो यू उस प्लानिंग कमीशन, वो जो नीति आयोग है उसमें ऑब्वियसली सारे चीफ मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है. सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स. सो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर. ओके, इनके जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो होते हैं. And then lieutenant governors of other union territories. Okay, lieutenant governors होते हैं बाकी union territories के, तो वो include किए जाते हैं. Okay, तो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे तो वो वहाँ पे डेफिनेटली होते हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द रीजनल काउंसिल. ये गवर्निंग काउंसिल था. नाउ रीजनल काउंसिल्स क्या होते हैं? रीजनल काउंसिल्स आर कन्वीन्ड और बुलाए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो वो स्पेसिफिक इश्यूज के लिए होते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी किसी जगह पे जो एक स्टेट को या रीजन को अफेक्ट करती होगी, तो उसके लिए रीजनल काउंसिल होता है. ओके, ये एड हॉक होते हैं. इट कैन बी सेट अप व्हेन नेसेसरी. अगर इफ द कंडीशंस डिमांड फॉर इट, अगर द सिचुएशन डिमांड्स फॉर इट, तो फिर सेटअप किया जा सकता है. इसको कहते हैं रीजनल काउंसिल्स. ओके, देन देयर आर स्पेशल इनवाइटीज जैसे एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विद रेलेवेंट डोमेन नॉलेज वगैरह. तो दे आर स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, कभी कभी हम बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं. जैसे अभी कोविड हुआ था, अपने यहाँ पे हुआ है अभी भी, लेकिन जब clearly you had no idea how to deal with this, right? So then you call in people जिनका expertise है pandemics में, epidemics में, and then you seek information and advice from those people and all. So those will be the special invitees. Okay, and apart from these, एक vice chairperson होते हैं, members होते हैं, ex officio members होते हैं, part-time members होते हैं. You have a chief executive officer and a secretary. Okay, these are all appointed to the commission. So this is the composition of the Niti Aayog. Okay, आपको इसके ऊपर unfortunately questions, unfortunately as in because it's such a vast topic, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको इसके ऊपर questions पूछे जाते हैं. But इसके objectives and functions बहुत आसान है. You don't have to worry about that. What are you trying to look at? National development priorities develop करें हम लोग. Okay, clearly that is the whole idea कि you are looking at the national development. Okay, cooperative federalism, of course that is a principle that you will go with. You need to form proper credible plans जिसको आप अच्छे से implement सके at every level of government. Okay, lower levels of government also and at the higher levels of government also. Okay, clearly. And you will always have the principles of national security in mind, even when you're forming the economic strategy policy. Clearly, the nation comes first. That sort of thing. Usually, आप design करते हैं strategic long-term policies या anything that is expected of a planning committee. किसी भी प्लानिंग कमेटी से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वही सब कुछ ये करता है. सो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, यार ये नीति आयोग का ही स्टफ है, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा. आई डोंट थिंक आपको ये भी पूछा जाएगा. This is too subjective an answer to be asked as an objective question. Okay, आपको MCQs पूछे जाते हैं, so ये बहुत subjective answer लगता है. Objectives of नीति आयोग. Anyways, functions देखते हैं. Okay, functions ये है to design the policy and program framework. Of course करता है. नीति आयोग is the think tank of Indian government. Okay, so clearly वो करता है. Cooperative federalism को foster करता है without a doubt. Monitoring and evaluation, yes. आप जो भी plans implement कर रहे हैं, अगर आप उसका कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेके कोर्स करेक्शन नहीं करते तो मुश्किल हो जाता है. ओके, एनीबडी विल टेल यू दैट कि कोई भी प्लान जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो रेगुलर स्टेजेस पे आपने उसका फीडबैक सीक करना चाहिए एंड सी इफ द प्लान इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान. मतलब देखना चाहिए कि वो पॉलिसी जैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जैसा भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं. इज इट
do we have the desirable effect after that implementation? ये constantly check करना चाहिए and then keep on course correcting, है ना? वो check वो करना चाहिए आपने. And then it's the think tank, knowledge and innovation hub. तो ये functions है. ये पक्का पता होने चाहिए आपको. Okay, that makes sense. National Development Council. I want to begin National Development Council, but we have just 1 minute. मैं आपको ना generally बता देती हूँ what a National Development Council is, and I'll begin by explaining tomorrow. Okay, मैं कल explain कर देती हूँ what it means. Okay, so National Development Council is obviously that body जो this is similar to National Planning Committee, but in the sense कि now you have the states also involved, okay, and states का cooperation ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, okay. वो नीति आयोग का भी advisory body है. National Development Council जो है ना, it is also an advisory body to the नीति आयोग. तो यहाँ पर ना आप ज़्यादा state support ढूंढने की कोशिश करते हैं. That is really what the National Development Council is about, okay. So this is more of an interaction between the center and the states. ये बहुत ज़्यादा interaction है यहाँ पे, okay. So National Development Council we had established this way back in 1952, and ये planning commission या नीति आयोग की तरह ही extra constitutional and non statutory है, okay. And ये it's like I told you, right, advisory body है to the नीति आयोग, लेकिन recommendations are not binding. कि इन्होंने जो बोला है वो नीति आयोग ने सुना नहीं तो कोई बहुत मेजर लॉ का इशू नहीं बन जाता है. That is what we are saying, okay. This is not binding. Recommendations are not binding. People, it's already 6:20, so I'll stop the lecture here, and you guys take care and stay safe, and I'll see you tomorrow, okay. Thank you, Ruturaj. Bye bye.